Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. Welcome to Kids Planet with Urwa, where we think together, explore the universe, and most of all, enjoy learning. I'm Science World की Tale of the Universe with it. And today we will be starting the fourth topic of Unit 3, which is Cosmic Inflation Theory. ये जो थ्योरी थी वो डेवलप हुई थी इन द लेट 1970s एंड इन द अर्ली 1980s, जिनमें इस थ्योरी में नोटेबल कंट्रीब्यूशंस थी बाय सेवरल थियोरेटिकल physicists including Alexei Starobinsky, Alan Guth and Henri Lund. इनको अवार्ड किया गया द कैल्विन प्राइज इन 2014 इस अचीवमेंट के लिए. वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशंस ऑफ दिस थ्योरी है ये है कि इज टू सेटल द अनआंसर्ड क्वेश्चंस अबाउट द यूनिवर्स जो कि अनएक्सप्लेनेबल थे फॉर द बिग बैंग थ्योरी. आई वुड से कि ये एक्चुअली एक साइंटिफिक एक्सटेंशन है ऑफ द बिग बैंग. इस थ्योरी के मुताबिक फॉर लेस देन अ मिलियंथ ऑफ अ ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकंड आफ्टर द यूनिवर्स's बर्थ एक एक्सोटिक फॉर्म ऑफ मैटर ने एक्सर्ट किया एक ग्रेविटेशनल रिपल्शन. ऑल्दो हम ग्रेविटी को नॉर्मली थिंक करते हैं ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव, लेकिन जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है वो अलाउ करती है फॉर सच अ फोर्स टू एग्जिस्ट इन स्पेशल कंडीशंस. एलन गथ के मुताबिक अंडर द कंडीशंस प्रेजेंट in the early universe जिस वक्त temperatures extraordinarily high थे, the existence of this material reasonably likely है. It only has to be a speck, he says. But when that speck starts to inflate, the expansion is exponential. जो inflationary epoch है, it is believed to have lasted from 10 के exponent minus 36 seconds to between 10 के exponent minus 32 seconds after the Big Bang. During this period, उसका volume increase हुआ by a factor of at least 10 के exponent 78 and expansion of distance by a factor of at least 10 के exponent 26 in each of the three dimensions. Inflationary period के बाद जो universe थी it continued to expand but at a slower rate. Even though जो discovery of the CMBR है उसने strengthen किया the scientific explanation of the Big Bang theory, it was still unable to answer a few questions about the universe. ये जो question है they will be addressed to at a certain level by the cosmological inflation theory. In the following topics we will discuss how these puzzles were resolved by the inflation theory. ये this is a picture you see ये show कर रहा है कि this is the Big Bang and this represents the inflation. You see in the beginning the expansion was very fast and आहिस्ता आहिस्ता वो जो expand होता है, the universe still expands लेकिन at a slower rate than at the inflation. Let's move on. So the first problem है which was not like solved by the Big Bang but answered by the inflation वो है flatness of the universe. Between 2001 and 2010 जो नासा का spacecraft था Wilkinson Microwave Anisotropy Probe WMAP उसने स्टडी किया the cosmic microwave background और उसने प्रेजेंट किया अपना डाटा. जो एनालिसिस था इस डाटा का उसने रिफ्लेक्ट किया that the universe is relatively flat. However जो आइंस्टाइन की theory of relativity थी, according to that theory every mass bends space and time. Therefore हमारी universe को curved होना चाहिए था in some way, either on itself like a ball positive curvature or out itself like a saddle जो कि negative curvature है. ये unlikely seem कर रहा था कि it was relatively flat. The Big Bang theory जो Big Bang theory थी उसने predict किया that there would be at least some curvature due to initial irregularities in its shape that would become more prominent during the 14 billion years. Before explaining कि किस तरह से inflation theory इस problem को resolve करती है, let me explain what it exactly means by a flat universe. We learned about the three Friedman models. You see हम उनको will be exploring them again. जो एक relative study of matter density and expansion rate of the universe, it can lead to three possible situations. The first is closed universe. There is enough matter in the universe कि जो gravity है it will eventually overcome the expansion of space. ये जो geometry of the such a universe है it is positive curvature. ये match कर रहा था Einstein's original model without a cosmological constant.
जो नेक्स्ट मॉडल है वो है ओपन यूनिवर्स मॉडल। इस मॉडल में ये होता है कि इतना इनफ मैटर नहीं है टू स्टॉप द एक्सपेंशन, तो इसलिए यूनिवर्स विल कंटिन्यू टू एक्सपैंड फॉर एवर एट द सेम रेट। ये जो स्पेस टाइम है इसका एक नेगेटिव कर्वेचर होगा विच विल बी सैडल शेप्ड। जो फ्लैट यूनिवर्स है, दिस इज अ फ्लैट यूनिवर्स मॉडल। जो एक्सपेंशन होगी इस मॉडल में, द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स एंड द डेंसिटी ऑफ द मैटर वो परफेक्टली बैलेंस आउट करेंगे। सो जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन होगी वो स्लो डाउन होगी ओवर टाइम बट नेवर क्वाइट स्टॉप्स कंप्लीटली। दिस स्पेस हैज नो ओवरऑल कर्वेचर। इन जनरल जो पैरेलल लाइंस है वो रिमेन करेंगे पैरेलल फॉर एवर एज दे ट्रैवल थ्रू द यूनिवर्स। अंडर द ओरिजिनल बिग बैंग कॉस्मोलॉजी you would expect the curvature of the universe to grow with time. Considering inflation theory, एक simple linear solution to the flatness problem is that कि जो inflation है वो stretch कर लेती है any initial curvature of the three-dimensional universe to near flatness. Simple terms में मैं ये करूँगी कि consider करें आप एक uninflated balloon जिसमें all kind of wrinkles होंगे और other abnormalities होंगी, but when आप उसको ब्लो करेंगे तो the balloon will start expanding and जो surface होगी it will get rid of all the irregularities. So according to the inflation theory, this happened to the fabric of the universe as well. ये है this illustration, it is the detailed all sky picture of the infant universe जो कि create हुए from the 9 years of WMAP data. ये हमारे पास these are the three models we discussed in the beginning, and one last thing I would like to show is you see this is the example. ये उस एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करा that I mentioned over here कि ये बलून था before it might have been before it was inflated, इसमें बहुत सी irregularities होंगी wrinkles, but you see जब ये हो गया inflate, so there is no irregularity. This is what happened to the universe. So that's all for today. Thank you.